All right, kids, let's start with the work. It's page number 304 on section B, ABC costing. We'll try to move at a slower pace. हम कोशिश करेंगे काफी slow जाएं. Please relate कीजिएगा, and then afterwards you can also watch a video on the YouTube channel, right? आप उसको भी relate कर सकते हैं. तो अगर आप घर पे कुछ नहीं भी कर रहे, just go through the previous questions जो हमने solve किए हैं. ठीक है, everyone? So let's start with the work, guys. But before we actually move ahead, right? Let's just be clear that everyone can listen to me clearly. Just raise your hands if you can listen to me carefully. If there is no audio interruption, just raise your hands. All right, kids, let's start with the work. Yes. All right, kids, let's start with the work now. Let's start with the work, which is page number 304. It's ABC costing. B Limited manufactures two products, alpha and omega. Alpha and beta nahi hai, alpha and omega are the two products. The following budgeted figures are available. The production and sales for alpha is 20,000 units, whereas omega key sales and production are 8,000 units. Direct material use per unit is 5 kgs for alpha and 11 kgs for omega. Direct material cost per kilo is $20 and for omega is 11. Labor hours per unit is 2 hours are needed for alpha and omega के ऊपर 1 hour. तो अगर अब मैं hours total में calculate करना चाहूँ तो मैं total में calculate करना my 1,000 units for alpha and each unit required 2 hours of labor, right? So 20,000 into 2, what are my total labor hours? Total labor hours अगर मैं calculate करूँ alpha के लिए, these are 40,000 hours. Omega के लिए it's 8,000 into 1, 8,000 hours. Next, the fixed overheads are forecast as 396,000 and allocated on the basis of labor hours. इसका मतलब right now हम अपनी fixed cost को on the basis of labor hours absorb कर रहे हैं, recover कर रहे हैं. तो वो absorb overhead rate, हम overhead absorption rate, recovery rate calculate कर सकते हैं, which is budgeted overheads divided by budgeted labor hours. Overhead absorption rate is budgeted overheads divided by budgeted labor hours. Budgeted overheads हमें examiner ने दिया हुआ है. What is our budgeted over 396,000? But what are our budgeted labor hours? 40,000 plus 8,000. That means total मिलाकर this is 48,000. So what is my overhead absorption rate? What is my overhead recovery rate? 396,000 divided by 40 means overhead absorption rate is $8.25 labor hour. It's $8.25 per labor hour. Right? Next. Calculate for each product the total production cost. Total production cost हमें for products
omega. हमें calculations का extra page to calculate this total production cost. Sir, we have omega. मैं अलग cost क्या करूँगा ताकि आपको बताऊं तो प्रॉब्लम होता है अल्फा की पहले कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ओमेगा की वर्किंग अलग से दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो अल्फा के लिए सबसे पहले नो वी यस यस वी विल स्टार्ट विद अल्फा ओनली डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में आई एम शोइंग ऑल द वर्किंग्स what is my output is 20,000 units पूरा 20,000 units multiply kilos is 100,000 kg equals 100,000 kg multiply cost per g and what is my key? It's $12 $20 sorry that million the material cost comes to $2 million then comes direct labor hours मैंने पहले से कैलकुलेट किए हुए थे बट फॉर यू सारीना आई एम गोइंग टू शो इट अगेन कि किस तरह से लेबर आवर्स निकाला हुआ है 20,000 यूनिट्स हैं अल्फा के and each unit required 2 hours of labor time that makes 24,000 hours sorry 40,000 hours and the wage rate per hour is 12 40,000 into 12 is 480,000 direct material plus direct labor the sum of all the direct is called prime 2,000,000 plus factory overheads हम चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पहले से एस्टैब्लिश किया हुआ था यस क्या था हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दैट वाज डॉलर 8.25 पर लेबर आवर और अल्फा बनाने के लिए हमें कितने लेबर आवर्स चाहिए अल्फा बनाने के लिए वी नीड 40,000 आवर्स ऑफ लेबर तो 40,000 into 8.25 that makes 330,000 330,000 plus prime cost is 2,480,000 the total comes to 2,810,000 this is my total production cost now अल्फा के बाद हम ओमेगा पे जाएंगे now we have omega के अंदर 8,000 यूनिट्स हैं each unit require 11 kilos 8,000 into 11 that makes 88,000 kgs and the cost per kg is also 11 that makes 968,000 direct labor 8,000 into 1 hour each unit require 1 hour 8,000 into 1 that makes 8,000 hours and the wage rate is $6 that makes 48,000 direct material plus direct labor the prime cost is
1,016,000. 1,016,000 plus factory overheads. Overhead का recovery rate हमें पता है, which is 8.25, and labor hours कितने हैं? 8,000 hours हैं labor के. 8,000 into 8.25 is our recovery rate. Absorption makes 66,000. That makes 66,000. The total overheads are 66,000. So 1,016,000 plus 66,000 total comes to 1,082,000. कोई confusion, कोई problem? Yes, kids, any confusion, any problem? Do you have any confusion? Audio clear hai beta? Abhi, do you have? Internet is lagging. Internet. मैंने तो मोबाइल का भी इंटरनेट बंद किया हुआ है, guys. Now, if you think you can listen and you have a clear concept, please raise your hands if all is okay. If all is okay, just raise your hands. All right, good. If all is okay, just raise your hands. My internet is, I guess, working perfectly. Guys, clear hai? Any confusion, any problem? आवाज नहीं आ रही है. Everything is fine. I don't think so that there is any confusion, any problem. Can you go? Obviously, I'll be going back to the working, but right now I'm just asking everything is clear. Okay. So this is how we have calculated the cost of alpha and omega. This is how we have worked out for alpha and omega. Direct material plus direct labor. The sum of the direct cost is called the prime cost. Prime cost plus factory overheads have given us the total production cost. And total production cost हमने आगे calculate कर ली. Alpha की भी, omega की भी. The only thing which was important was charging the recovery rate, and the recovery rate was based on labor hours. So if you see 330 plus 66, the total overheads were what? 396,000. 396,000 के total overheads को हमने alpha and omega में distribute कर लिया है. 330,000 and 66,000. Now we will be moving towards the next requirement, which is an easier one, where we have to calculate the cost per unit. So if we know the total production cost, and if we know the per unit, we have, the output level, we can easily calculate the production cost per unit. We can calculate the production cost per unit. Cost per unit हमें calculate करना है. Now we'll be moving towards cost per unit. So let's work out on cost per unit. We know the total cost. Total cost divided by output level will give us what? We can calculate cost per unit. Total cost divided by output level. Let's calculate the cost per unit.
दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Sir, alpha की total cost is 2810 divided by output level is 20,000 units divided by output level is 20,000 units. So our cost per unit is 14.5. 140.5. It's $140.5. दूसरा ओमेगा देखें, उसका आउटपुट लेवल, द आउटपुट लेवल ऑफ ओमेगा इज 8,000 यूनिट्स. तो 1,082,000 divided by 8,000 units, that is 135.25. Next, the selling price per unit is calculated by adding 50% to the cost. The selling price per unit is calculated by adding 50% to the cost, right? So now we have the cost per unit. We need to add 50% profit markup and we can calculate the selling price. So for both product, now we can determine the selling price. So the selling price for alpha comes to 210.75, and for omega it's 202 point. इसका profit अगर हम ऐड करेंगे 50%, that is 67.63. Round up किया है हमने इसको, and the selling price comes to 202.88. Right? Moving ahead, जो हमारी simplest requirement थी वो हमने cover up कर ली है. 3 + 4 + 2 6 marks, but the main requirements are left now. It states that the directors of the company have been advised that they should adopt ABC, activity-based costing, to allocate the production overheads. They have identified the four major activities. Four major activities का मतलब हमने चार अपने cost pools को determine किया है.
involved in the production cycle as machine setup, material handling, maintenance of machinery, and production, inspection and packing. जो हमारी 396,000 की कॉस्ट थी उसको हमने ब्रेकअप कर दिया. कॉस्ट ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? अ कॉस्ट पूल. Now we have 4 different cost pools: machine setup, material handling, machine maintenance, and inspection and packing. Machine setup हमें alpha and omega का दिया हुआ है कि 15 times we have to set up the cost, set up machine for alpha and omega 10 times. Material handling के लिए 6 times receipts आती हैं, omega की 14. Total अगर हम निकाल लें तो machine setup is 25, machine material handling is 20, machine maintenance के 130 plus 100 230 hours, and inspection and packing के अंदर total 60 hours हम spend करते हैं. First of all, examiner is asking for the disadvantages of adopting activity-based costing. Activity-based costing के disadvantages हमने कल भी discuss किए थे, जिसमें पहली example या पहला इसका disadvantage क्या है? It is a time-consuming activity and implementation is not easier. It is a time-consuming activity and the implementation is not easier. इसके अलावा it requires additional cost. Training is required. Right? कोई भी दो आप disadvantages and drawbacks बता सकते हो. Calculate the total production overheads to be allocated to each production using activity-based costing. Now the examiner is not asking us to calculate the total cost. वो कह रहा है total production overheads हम किस तरीके से allocate करेंगे. तो 90,000 हमारी machine setup cost है, उसको हम 15 and 10 के ratio में distribute कर सकते हैं. Right? Rate calculate कर लेते हैं. हर activity का हम rate निकाल सकते हैं. 90,000 divided by 25 times. So the rate is 90,000 divided by 25. That makes 3,600. $3,600. Next is 80,000 divided by 20. That makes 4,000 per receipt. This is 4,000. Then 46,000 divided by 230 hours. That makes $200 per hour. And 180,000 divided by 60 hours, that makes 3,000. अब हम इन्हीं रेट को अल्फा एंड ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. राइट? रेट हमारे पास हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं साथ में कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है. मैं अल्फा की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा की अलग कैलकुलेट करूंगा. पहले अल्फा. चार ओवरहेड्स हैं. मशीन सेटअप, next is material handling, next is machine maintenance, next is inspection and packing. Inspection and packing. और यही चार कॉस्ट हमारे पास ओमेगा पे भी अप्लाई होगी. राइट? तो पहले अल्फा की हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं. मशीन सेटअप का हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ है गाइस. व्हाट इज द रेट फॉर मशीन सेटअप? मशीन सेटअप का रेट इज $3,600 और अल्फा के ऊपर 15 टाइम्स सेटअप होता है. तो 3,600 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 54,000. That is 54,000. Material handling. Sir, material handling का रेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है. That is 4,000, right? 4
4,000 multiply by alpha की 6 receipts हैं. 4,000 into 6 is 24,000. 24,000. मशीन मेंटेनेंस का हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ है गाइस. व्हाट वाज द रेट फॉर मशीन मेंटेनेंस? मशीन मेंटेनेंस में हमने जो रेट डिटरमिन किया था दैट वाज 2000 or 200. So it was 200 multiplied by 130 hours. 200 multiplied by 130 hours, that is 26,000. 26,000. Inspection and packing. Inspection and packing may we had 40 hours. And what was the rate? The rate was 3,000. 3,000 multiplied by 40. That is 3,000 multiplied by 40. That is 120,000. तो जो हमारे ओवरहेड्स हैं उसमें 396 आउट ऑफ 396 हमने अल्फा को टोटल ओवरहेड्स कितने दिए हैं? दैट इज 54,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000 प्लस 120, दैट इज 224,000. अल्फा के बाद मूविंग ऑन टुवर्ड्स ओमेगा. सर ना अल्फा के बजाय हमें ओमेगा के लिए कैलकुलेशंस करनी है. ओमेगा में सर मशीन सेटअप का रेट वही रहेगा लेकिन टाइम्स चेंज हो जाएंगे. 10 टाइम्स है ये. 3600 into 10 is 36,000. 36,000. Material handling में receipts change हो जाएंगी. These are 14 receipts. That is 4,000 into 14. That is 56,000. Machine maintenance का rate 200 multiplied by hours are now 100 hours. That is 20,000. Inspection and packing के अंदर 3,000 और hours change हो गए 20 hours. That is 60,000. तो अगर इसका हम टोटल कर लें दैट इज 36,000 प्लस 56,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000. टोटल इज 172,000. राइट किड्स? तो 4 मार्क्स की एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है. मूविंग अहेड. Recalculate the cost per unit and selling price of each product maintaining the 50% markup. तो प्राइम कॉस्ट तक तो हमारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी. प्राइम कॉस्ट में हम ओवरहेड्स ऐड अप कर देंगे जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं. उससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे जिससे वी विल गेट कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट पे वील अप्लाई 50% प्रॉफिट. तो लेट्स डू इट गाइस. अल्फा अल्फा प्राइम कॉस्ट वही रहेगी जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी. डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद प्राइम कॉस्ट बिकॉज प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज नहीं है. ऊपर जाकर देखें अल्फा की हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की थी किड्स. अल्फा 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 की प्राइम कॉस्ट वाज 2,480,000. यही आ जाएगी 2,480,000 प्लस अल्फा के फैक्ट्री ओवरहेड्स. व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट डी में कैलकुलेट किए दैट इज 224,000. तो 2,480 plus 224 that is 2,704,000 total production cost.
per unit भी calculate कर लेते हैं. Divided by output level 20,000 units. So sir, the cost per unit is now 135.2. 135.2. This is cost per unit. Plus profit. Plus profit. And what was profit? 50% हमारा profit था. Multiply by 50%, that is 67.6. 67.6 plus 135.2, that is 202.8. 202.8. Now we'll perform this thing for omega as well. Same हमें omega के लिए भी apply करना है. All right. Now omega की prime cost पे कर लेते हैं. Omega की prime cost हमने calculate की हुई है guys. What is omega की prime cost? This is 1,016,000. Plus factory overheads. Factory overheads were 172,000. The total comes to 1,188,000 divided by output level. And what is our output level? It's 8,000 units for omega. Divided by 8,000 units. So we get the cost per unit of 148.5. Plus profit is 50%. 148.5 ka 50% is 74.25. So we got the selling price to be 222.75. Next, guys, moving on towards the next. So the next part states that explain 3 reasons why method should change the method of allocating overheads to use activity based costing. तो वही पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे, हमको हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे कि एबीसी कॉस्टिंग शोज द more realistic approach. ABC costing shows the more realistic approach of charging overheads. ABC costing shows the more realistic approach for charging overheads to the product cost. No, we don't have to compare. We will not be comparing this thing. We'll just be writing the advantages of ABC. We are not required to compare. You just say ABC B limited. ABC costing shows the more realistic approach
ABC costing shows the more realistic approach towards charging overheads and in determination of the total cost of the product. The selling price and in determination of the selling price and in determination of the selling price, which maintains the demand for the product and at the same time earns desirable amount of profits. Under the previous method, Omega was using less number of labor hours. And therefore smaller proportion of overheads were allocated to this product. And therefore smaller proportion of overheads was allocated to this product. And therefore smaller proportion of overheads were allocated to this product. And the product was underpriced. And on the other hand side, alpha was overpriced. And you can further discuss the advantages of ABC. वो भी यहाँ पर आपके पास use हो सकता है. It has been suggested that customers will not accept the increase in omega. Directors are therefore considering changing the profit margin to 60% on alpha and 30% on omega. Calculate the new total profit for each product if the change is made. तो हमने total cost already calculate की हुई है, right? हमने टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है प्रीवियस के अंदर. एबीसी की टोटल कॉस्ट हमें पता है. हम अपनी टोटल कॉस्ट को पिक करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन्स चेंज कर देंगे, राइट गाइस? तो अल्फा की अगर हम बात करें, मैं अल्फा की कैलकुलेशन बता देता हूं. ओमेगा की आप चेक कर लीजिएगा. अल्फा, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ अल्फा? Alpha की total cost was 2,704,000. Multiply by 60%. तो हम ओमेगा का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. Multiply by 60%. Total cost का सिर्फ 60% अगर हम कैलकुलेट कर लें तो we will be able to determine the profit for alpha. तो 2,704,000 का 60%.
So the profit is 1,622,400. 1,622,400 for alpha. ओमेगा का भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं. अडॉप्ट क्यों करना चाहिए चेंज? बिकॉज जिस प्रोडक्ट की हमारे पास हमें डिस्कस करना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे टोटल प्रॉफिट पर, क्या इफेक्ट टेक प्लेस होगा, राइट? एंड वी कैन मेंटेन द आंसर. सो आई गेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, राइट? आप लोग प्लीज काइंडली yes kids, if you have any queries, any problem, just raise your hands. If all is clear, we can proceed ahead. Yes, anyone with the queries? वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं, वो प्रॉफिट के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, कॉस्ट पर ही अप्लाई हो रहा है, राइट? इट्स नॉट, उसने कहा है कि प्रीवियसली उसने कहा था 50% होगा, अब यहाँ पे 60% है, राइट? तो इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मार्कअप, प्रॉफिट मार्कअप, इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्जिन. What will be the last part of the theory? The theory last part would be we need to compare कि हमने जब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, एक प्रोडक्ट का हम प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हैं और एक का बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली हमारी जो प्रीवियस सेलिंग प्राइसेस थी, डिमांड कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा है? अल्फा की डिमांड ज्यादा है, तो अल्फा का अगर हम प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे ओवरऑल प्रॉफिट विल इंक्रीज. और जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा. That means the overall profit by changing this strategy will increase the firm's total profit. ठीक है guys? The product with a higher amount of volume, with higher volume is increasing, उसका profit margin increase कर रहे हैं तो overall profit will increase. Clear guys? If you don't have any questions, just raise the hands and then we can सारीना बेटा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ऑलराइट, so let's end this class. We will be starting an O levels class in a while. In 15 minutes we'll be starting with. Take care everyone.